Hello everyone. So today again I'm before you with a new topic, that is drug therapy. So before I start, I would like to remind you I'm Dr. Anjali Srivastava, a retired zoology professor, and this is my YouTube channel Adarsh Alia. Basically अभी हम इस पे zoology के classes run कर रहे हैं या zoology के students जो topics request कर रहे हैं उनको हम discuss कर रहे हैं, but it is always open for all the students. As I am a zoology professor, I can discuss the zoology topics. अगर और टीचर्स शेयर करना चाहें अपना नॉलेज इस प्लेटफॉर्म पर तो उनका बहुत स्वागत। सो माय टुडेज टॉपिक इज ड्रग थेरेपी। अगर हम साधारण भाषा में बोलें, नॉर्मल लिटरेचर बोलचाल की भाषा में, ड्रग थेरेपी इज दवा से इलाज। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आते हैं, पहला है दवा, दूसरा है इलाज। दवा हम सब जानते हैं एक ऐसा सब्सटेंस, और normally we can say a drug is a substance or drug or pharmaceutical. जैसा मैंने पहले भी कहा, drug therapy, it can be the alternate word for this drug therapy is pharmacotherapy. That is medical substances से, medicines से ailment को दूर किया जाए body के, तो that is a pharmacotherapy or drug therapy. Now, a drug can be defined as a substance used to prevent or cure a disease or ailment to alleviate its symptoms. कोई एक तकलीफ है हमें, उस तकलीफ को या तो खत्म किया जाए या उसको रिकवर किया जाए, या एटलीस्ट बिल्कुल नहीं खत्म कर सकते हैं तो उसे सप्रेस कर सकते हैं। Alleviate is suppressing the symptoms of the ailments, the problems that that one is facing in its body. It is a substance other than food that can affect functioning of brain and rest of the body work and cause changes in mood, awareness, thoughts, feelings or behavior. दवा सिर्फ हम खा लिए और बुखार ठीक हो जाए उसके लिए हम दवा नहीं खाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि दवाइयाँ या फार्माटिकल कई वजहों से लिया जा सकता है। मूड ठीक करने के लिए, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए, कभी कभी थोड़ा थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए या उनको अल्टरनेट करने के लिए भी ड्रग्स यूज किए जा सकते हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन से द ड्रग्स आर द सब्सटेंसेस यूज्ड एज मेडिसिन और इन मेकिंग मेडिसिन। बहुत सारी दवाइयाँ बहुत सारी दूसरे मेडिसिन को बनाने में भी यूज की जाती हैं। सो एंड अगेन एज वी हैव सीन हियर, ड्रग्स बहुत सारी थेरेपी में यूज किए जाते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल थेरेपी ये ब्रेन पर इफेक्ट करते हैं मेडिसिन या ड्रग्स, और ब्रेन को एनलाइटन करते हैं विद द गुड फीलिंग, गुड फील गुड से। और इस पर इसका एक कि इसके हार्म्स भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा हार्म अभी जो सोसाइटी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है, दैट इज द ड्रग अब्यूज। दवाइयाँ एडिक्शन के कगार तक अगर पहुंचे तो बहुत नुकसानदेह होती हैं। सो दिस इज द ड्रग। मेनली बहुत सारी कैटेगरीज हैं। वैसे तो आप जितनी ड्रग थेरापी पे अगर आप मैंने जब साइट्स देखना शुरू किया, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे मेरे पास बहुत बुक्स और नोट्स तो नहीं है, तो मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ बहुत सारे साइट्स कंसल्ट करके कर रही हूँ, तो साइट्स का नंबर मैं भूल जाऊँ, इतने साइट्स मुझे मिले हैं। क्लिनिकल गेट, LLS.org.in के कई एक different sites हैं, then nature.com, then Britannica, then Wikipedia. These are very few sites. अगर आप एक बार गूगल कीजिए तो, और every site is giving one or more or this or that information very correctly. So it is very interesting subject. एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि ड्रग थेरेपी पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं जब डिस्कस करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी, जैसे कंबाइंड ड्रग थेरेपी। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम पूरा अलग एक एक टॉपिक पे बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस ले सकते हैं, और दवाइयाँ और उनका यूज कैसे उनको हम करते हैं, जनरल पब्लिक के अवेयरनेस के लिए भी हम इस तरह के टॉपिक्स पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं
You let me know in my chat box and I'm ready. So first, let us come back on our topic, drug therapy. So drug we have seen, the four main categories of drugs are stimulants, जो enhance करते हैं कुछ बॉडी के सिस्टम्स या मेटाबॉलिज्म कुछ सप्रेस हो गया है, जिसकी वजह से एलिमेंट आई हुई है बॉडी में, सिकनेस आया हुआ है, इलनेस आया हुआ है, तो उनको उनको स्टिमुलेट करते हैं. डिप्रेसेंट, कभी कभी excessiveness appear होने लगता है in metabolism as well as in mood, in behavior. So all to depress those excessively stimulant features or phenomenon or symptoms को डिप्रेस करना भी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है. तो उसके लिए जो मेडिसिन देते हैं, those are depressants. Then are the painkillers, जो पेन को सबसाइड करने के काम आते हैं. And then is a very interesting group is hallucinogens, a group of medicine that gives the feeling of that is hallowing create करते हैं, एक imagination create करते हैं कि मैं ठीक हो रही हूँ बीमारी से. Exactly कितना क्योर हो रहे हैं और कितने समय के लिए हो रहे हैं, that is a matter of debate. So that this such group of medicines which are effective for a given period or that are creating hallucin, that the elements are being procured, that group is called as hallucinogens. A group of drugs making feel better, आपको feel कराते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं. So in addition, many substances used for therapy or treatment of ailments. So that is the drug. Then the next term is therapy. अगर आप नॉर्मल भाषा में बोलिए इलाज. और ये इलाज हम सब जानते हैं कि इलाज के लिए दवाइयाँ देनी होती हैं. That is administering drugs as prescribed medicine to treat health disorders or diseases, may be physical, may be psychological. तो यूजुअली ड्रग की थेरापी तब होती है जब कुछ डॉक्टर्स या फिजिशियन या फार्मासिस्ट कुछ प्रेस्क्राइब करके देते हैं. तो बाय लॉ वही ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं जो प्रेस्क्राइब्ड हों, जिनको प्रेस्क्रिप्शन से फार्मासिस्ट से लिया जाए, मेडिसिन के शॉप से लिया जाए. दोज आर लॉफुल, दोज ड्रग्स आर लॉफुल ड्रग्स. और उनसे जब ट्रीटमेंट होता है तो बेसिकली उसी को थेरापी कहते हैं लॉ मेडिकल टर्म्स में. बट बोलचाल की भाषा में हम जो भी यूज करते हैं, इवन हम पेट का गैस को ठीक करने के लिए जो अजवाइन खाते हैं या हींग खाते हैं, तो दैट ऑल्सो कैन बी टर्म्ड एज ड्रग्स, एंड दे आर यूज्ड in a lot of Ayurvedic medicines to form the medicine. So therapy is the use of those medicines or drugs for treatment of the disorders or diseases, which is physical, which may be physical, which may be psychological. Now in general again, जो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज में है थेरापीज के टाइप्स, दे आर ड्रग थेरापी, साइकोलॉजिकल थेरापी, दिस इज द, और साइको एनालिटिकल थेरापी ऑल्सो इसको हम कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ थेरापी. देन बिहेवियरल थेरापी, देन कॉग्निटिव थेरापी, दैट इज द जेनेटिकल थेरापी, जो हेरिडिटरी डिजीजेस होते हैं, जो हेरिडिटी के साथ जनरेशन टू जनरेशन कैरी होते हैं, उनका ट्रीटमेंट. And then integrative therapy. This is, as I have told you, this is a very, very unique and very interesting topic. Combined drug therapy. एक से ज़्यादा drugs को combine करके जब therapy करते हैं, तो this is, if you are interested, I can take a complete class on combined drug therapy, that is the CDT. This is a very interesting topic. Now, the disease, हम किसका इलाज कर रहे हैं? Definitely कोई बीमारी है, तो उस बीमारी को मेडिकल टर्म्स में या साइंटिफिक टर्म में क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट बीमारी? सफरिंग फ्रॉम मैल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म और मैल फंक्शनिंग विद इन द बॉडी इटसेल्फ. बॉडी कोई बाहर का फॉरेन बॉडी के ऑर्गेनिजम्स के मैल फंक्शनिंग से भी बीमारी हो सकती है, बॉडी के इनसाइड मेटाबॉलिक डिफॉल्ट से भी बीमारी हो सकती है, और इन डिजीज के अलावा
और भी सडन एक्सीडेंटल कॉजेज भी हो सकते हैं जिनकी थेरेपी ड्रग से की जाती है. आवर मेन थेरेपी इज in this class we are going to discuss mainly on this drug therapy. दवाइयों से इलाज हमारा आज का मेन टॉपिक है. Now let us come to our main topic, that is the drug therapy rather. Now as I have told you, drugs can do good. ड्रग्स से बहुत सारे it is a trivial phenomenon we can say, as in the avoidance of a sleepless night in a noisy hotel or social embarrassment from it. This is just an example कि अगर आप कहीं पे हैं ऐसी जगह जहां आप रनिंग नोज से परेशान हैं, तो आज ट्रिविया अगर आप ड्रग को यूज कर सकते हैं कि दैट इज द पार्श्व में कुछ प्रॉब्लम जिनको बोलते हैं ना, बैकग्राउंड में कुछ इरिटेशनल बिहेवियरल चीजें हैं, तो आप मेडिकली उसको इमीडिएट करेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर द टाइम बी. तो वो एक फायदा है. Benefits are not necessarily trivial to recipients concerned to be at their best in important matters. ये दैट इज, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है. ये सब चीजें क्या आप जहाँ हैं वहाँ दूसरों को भी कहीं अनवांटेड कंडीशन से बचाना हो गया. मे बी लिटरली लाइफ सेविंग, बहुत बार सीरियस एक्यूट कंडीशनिंग्स को भी बचाते हैं ड्रग्स. septicemia, pneumonia, prevention of life devastating disability from severe asthma, epilepsy, blindness. So many reasons. जो जितनी भी तरह की sickness and diseases हैं उनका ट्रीटमेंट जो हम करते हैं ड्रग से, तो ड्रग्स हमेशा बहुत तरह से फायदेमंद है. बट ड्रग्स कैन डू हार्म. दिस इज वेरी वेल फैक्ट नोन दैट एलोपैथी जो आज का सबसे ज्यादा प्रचलित जिसको कहिए तरीका है मेडिकल ट्रीटमेंट का, that is creating a lot of hazardness of the health. Of course for the time being या immediate relief के लिए या देखने में, जैसे मैंने कहा हेलोइज्म क्रिएट करते हैं, ये ऊपर से जिसको कहते हैं ना टचअप करके ऑर्गन्स को, मेटाबॉलिज्म को टचअप करके सही दिखा देते हैं, बट इंटरनली it is doing harm in a number of ways. As a hangover from a hypnotic or transient headache from glycerine nitrate used for angina. अब जैसे ये एक मेडिसिन है ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट. सर दर्द से अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं या मूड स्विंग से बहुत परेशान है, तो ये आपको थोड़ी देर के लिए ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन आपको रिलीफ दे सकता है, बट इट मे कॉज ग्रेटर हार्मफुल इफेक्ट्स फॉर लैटर. The harm may be life-destroying, as in rare sudden death following an injection of penicillin. Rightly regarded as one of the safest of antibiotics, जिसको penicillin जिसको सबसे ज्यादा safest माना जाता है, अगर बिना टेस्ट किए हुए, बिना जांच किए हुए अगर दे दिया जाए तो बहुत बार ये पेनिसिलिन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है. So there are certain cases, steroids like लिपोपोडा इन पार्किंसंस डिजीज, ये सब चीजें अगर आप दे देते हैं और इनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी कंट्रोल में नहीं है, तो दे कैन डू ग्रेट हैजार्ड्स. देयर आर रिस्क्स इन टेकिंग मेडिसिन जस्ट एज देयर आर रिस्क इन फूड एंड ट्रांसपोर्ट. There are also risks in declining to take medicine when they are needed, just as there are risks in refusing food or transport. So these are very common things कि आपको जरूरत है तो दवा लेनी ही चाहिए, गैर जरूरी है तो ओवर ईट नहीं कीजिए, दवा के साथ भी वही चीज है. So efficacy and safety do not lie solely in the molecular structure of the drug. ड्रग की जो मॉलिकुलर जेनेटिकल लेवल पे ड्रग का इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं. डॉक्टर्स मस्ट चूज विच ड्रग टू यूज एंड मस्ट अप्लाई देम करेक्टली इन रिलेशन नॉट ओनली टू देयर प्रॉपर्टीज बट ऑल्सो टू दोज ऑफ द पेशेंट्स एंड देयर डिजीज. पेशेंट टू पेशेंट दवाइयाँ वेरी करती हैं, उनकी कॉग्निटिव स्टेट दवाइयों से दवाइयाँ अफेक्ट हो सकती हैं, उनका एज, उनका रिस्पॉन्सिवनेस, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो दवाइयों का असर हार्मफुल इफेक्ट कर सकती हैं. उन्हीं कंडीशंस, वही दवाइयाँ दूसरे कंडीशंस में दूसरे पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग हो सकती हैं, और वही दवाइयाँ कुछ
दूसरी कंडीशन में पेशेंट्स के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। इसके अलावा जो यहाँ नहीं मेंशन है, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है ड्रग का। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, से कफ सिरप, ये तो कोई बहुत नशे वाली दवा भी नहीं है। दिस इज नॉट एन एडिक्शन मेडिसिन दैट कैन बी of which that can be get addicted, but many people, बहुत बार ये रिपोर्ट हुआ है कि कफ सिरप से लोग एडिक्टेड हो जा रहे हैं। So addiction is the to making a habit of taking those medicines, और सब कुछ समय के बाद definitely, because they are they have been created from the certain proteins, hormones, chemicals, and they are one or other way they are going to harm the body if taken in unwanted or undesired amount. So the drugs are useful, drugs are harmful. Now drugs are used in three principal ways. तीन principal तरीकों से drugs को हम use करते हैं therapy के लिए. First is to cure disease, primary and auxiliary. Primary conditions may be, and auxiliary conditions are the basic conditions, the conditions in depth. Then to suppress disease, बहुत बार तो बिल्कुल incorrect, बहुत that is बिल्कुल क्योर तो डिजीज नहीं हो सकता है, बट इवन टू सप्रेस डिजीज द ड्रग्स आर यूज्ड many times. Then to prevent disease, that is prophylaxis, बीमारी को होने से बचाने के लिए, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वैक्सीनेशंस। बहुत सारे वैक्सीनेशंस ऐसे होते हैं जो बीमारी जिसमें ड्रग्स दिए जाते हैं टू प्रिवेंट द डिजीज, डिजीज हो नहीं, डिजीज बीमारी से बचा जा सके, उसके लिए जो दवाइयां दी जाती हैं, दोज आर the prevention disease drugs that is, and this prophylaxis, that is the prevention of disease, may be done in two ways. So this is the explanations. Cure implies primary therapy as in bacterial and parasitic infections that eliminate the disease and the drug is withdrawn. दिया जाए, क्योर किया जाए, और उसके बाद जब जरूर बीमारी ठीक हो जाए तो उसको विड्रॉ कर लिया जाए. Auxiliary therapy as anesthetics and ergometrin, that is child birth के समय जो दवाई दी जाती है, anesthetics जो anesthesia दिया जाता है, और further time being जब मेडिसिन, दूसरे मेडिसिन को यूज करने के लिए, दूसरे ड्रग्स या दूसरे मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को यूज करने के लिए ऑक्सिलरीली जो ड्रग्स दिए जाते हैं, they are the auxiliary, that type of treatment is called as auxiliary therapy. Then the second type is to suppression of diseases continuously or intermittently to avoid effects of disease without attaining cure, as in hypertension, diabetes, epilepsy, asthma. लॉन्ग टर्म के लिए जिनकी इलाज बिल्कुल, जिसको एकदम क्योर करने का दावा नहीं किया जा सकता है, तो उसके बीपी बहुत हाई हो रहा है, उसको दबा के बीपी को नॉर्मल रखिए, उसके लिए सप्रेस करके रखने के लिए, तो इस तरह से कुछ डिजीजेस के लक्षण को या हार्मफुल इफेक्ट्स को सप्रेस करके रखने वाले ड्रग्स दे करके सप्रेस किया जा सकता है. सो दैट इज द सप्रेशन, दैट्स, or to control symptoms such as pain, cough while awaiting recovery from the causative disease. Suppression एक दूसरी तरीके से भी हो सकता है, जब तक डिजीज प्योरली क्योर नहीं हो जाए तब तक जो तकलीफ हो रही है उस तकलीफ को दबा करके रखा जाए. बहुत पेन हो रहा है, अब आर्थराइटिस से, जॉइंट पेन से आप बहुत परेशान हैं, तो जब आर्थराइटिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से दर्द से बहुत परेशान है, तो जब तक वो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक वो तकलीफ से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा. बट दैट इज अ लॉन्ग टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट. तो उस दौरान उस पेन को आप दबाने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं, दैट इज द ड्रग्स, द सप्रेसिव इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग इज. And then the drugs used for prevention, that is prophylaxis. This may be primary, this may be secondary. In primary prevention, the person does not have the condition and avoids getting it. बीमारी हुई नहीं है पर बीमारी से बचा जाए, जैसे वैक्सीनेशंस हुए, कंट्रासेप्शंस हुए, मलेरिया के प्रिवेंटिव डोजेस हुए. In secondary prevention, the patient has the disease and objective is to reduce the risk factor so as to retard progression or avoid repetition of an event. जैसे बीमारी है
बट उसको और ज्यादा खतरनाक होने से उसको बचाया जा सके या उसको दबाया जा सके रिस्क को, that is called as the secondary prevention. The example is aspirin, lipid lowering drugs in atherosclerosis and after myocardial infarction, that is a heart attack. Then antihypertensiveness, the hypertension, to prevent recurrence of stroke. Stroke फिर से नहीं हो जाए, उस कंडीशन को अवॉइड किया जा सके. सो ड्रग थेरापी अगर हम डिफाइन करें एक लाइन में, तो वी कैन डिफाइन इट एज ड्रग थेरापी और फार्माकोथेरापी इन्वॉल्व्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स टू ट्रीट और प्रिवेंट द डिजीज. In some cases, often in the treatment of disease such as cancer, HIV infection, and diabetes, multiple drugs with different active ingredients may be administered. That is the combination therapy, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ. That is a very, very interesting part of this drug therapy, which can be discussed completely separately. I will take one class on combination therapy. Now, the principles of drug therapy. Drug therapy के 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं. फार्माकोकाइनेटिक्स, दवाइयाँ का जो मूवमेंट है बॉडी के अंदर जाके कहाँ से किस तरह का उनका काइनेटिक्स है जो कि थेरापी में यूज होता है. देन फार्माकोडायनामिक्स, मेटाबॉलिज्म पर उनका इफेक्ट क्या होता है, डायनामिक उनकी डायनामिकसिटी क्या है एक बार मूवमेंट हुआ विथ एनी मीडियम दैट मे बी through hormones, through enzymes, through blood plasma, that through the medium the kinetics is done. Then dynamics, that is the dynamic action of the drug. And then the third principle is pharmacogenomics, that is the genetic effect of the drugs. These are the 3 main principles of drug therapy. The pharmacokinetics describes movement of drug throughout the body and the concentration of a drug that reach a given body space and or tissue and the drug's residence time therein. कितना समय उस टिश्यू में, उस ऑर्गन में, टारगेटेड जगह पे ड्रग को कितना समय रहना है, पहुंचना और रहना. That is the kinetics. Conceptualized by considering the characteristics that collectively are the determinants of the dose. Dose के 4 important determinants हैं जो फार्माकोकाइनेटिक्स को डिसाइड करते हैं. कंसंट्रेशन इफेक्ट रिलेशनशिप, collectively it is called as concentration effect relationship. कितना कंसंट्रेशन है और उसका इफेक्ट क्या है. अब्जॉर्प्शन, ड्रग का अब्जॉर्ब होना. Distribution, to distribute into the targeted portions or the cells or the tissues or the organs. Then metabolism, metabolism पे क्या activity होती है. And the excretion, ADME. मेडिसिन के इफेक्ट के बाद, मेडिसिन की डायनामिक्स के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो एक्सक्रीट करना भी जरूरी होता है. टू बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और हम ये जानते हैं कि बहुत सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं जो एक एलिमेंट को क्योर करते हैं तो दूसरे एलिमेंट की वजह भी बन सकते हैं. तो ये जरूरी है कि अगर जो जरूरी जो रिक्वायर्ड कंडीशन अगर हम मिल जाता है एलिमेंट्स का या ट्रीटमेंट का, तो बचे हुए पार्ट को एक्सक्रीट आउट होना भी जरूरी है. एंड सो दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फार्माकोकाइनेटिक्स, दैट इज द मूवमेंट. बदन से बाहर भी निकालना, अंदर ले जाना और बाहर निकालना, ADME. देन इज द फार्माकोडायनामिक्स, relationship between drug doses or drug concentration and the response. Response और drug dose के बीच में जो relationship है, that is the pharmacodynamics. The responsible may be desirable or undesirable, that may cause toxicity. अगर वो उसने desirable condition drug ने desirable results दिए तो reduce होगी ailments, बीमारी कम होगी. पर 2 वजह हो सकते हैं. या तो आपने जब जरूरी हो एलिमेंट्स को जितना सप्रेस करना चाहिए था ड्रग को, उसके आगे का कंसंट्रेशन हार्मफुल हो, इसके पहले उसको रोक दें. या जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी दी जा सकती थी दी जा चुकी, अब उससे ज्यादा देने से भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी हम देते रहें. तो इन दोनों स्थितियों में यही दवाइयाँ टॉक्सिन्स क्रिएट कर सकती हैं बॉडी के अंदर, हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकती हैं. दैट इज कॉल्ड एज द टॉक्सिसिटी और अनडिजायर्ड
effectiveness. Although in clinical practice, the response to drug in different patient population is often described by a standard dosing or concentration range, response is best conceptualized along a continuum where the relationship between doses and response is not linear. जहाँ continuum is the continuation, आप एक continuity बना करके रखिए, जहाँ पर एक linear अगर हम ग्राफ बनाए तो एक लीनियर ग्राफ नहीं अगर मिलता है तो डिसकंटिन्यू कर दिया जाना चाहिए. ये फार्माकोडायनामिक्स का रिवर्स इफेक्ट शो करेगा. एंड द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ ड्रग therapy is pharmacogenetics. How variants form of human genes contribute to inter-individual variability in drug response. Drug को response तो कर रही है body, पर क्या वो बॉडी के जीन्स को भी इफेक्ट कर रही है, जीनोम को इफेक्ट कर रही है, डीएनए या क्रोमैटिन के फॉर्मेशन को ऑल्टर कर रही है, इस पे ध्यान देना जरूरी है. द फाइंडिंग दैट ड्रग रिस्पॉन्सेज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पेशेंट्स जेनेटिक प्रोफाइल हैज ऑफर्ड ग्रेट होप फॉर रियलाइजिंग इंडिविजुअलाइज्ड फार्माकोथेरेपी व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, डिजीज एंड और ड्रग रिस्पॉन्स प्रेडिक्ट्स ड्रग रिस्पॉन्स. तो ये फायदा भी कर सकता है, ये नुकसान भी कर सकता है. जीन्स की स्टडी करके फार्माकोजेनेटिक्स दवा की जिसपे आप दवा दी जा रही है उसके जीनोम के साथ, उसके जीनोमिक के साथ ड्रग का क्या रिएक्शन होगा, ये हार्मफुल है कि बेनिफिशियल है, इसकी स्टडी करके अगर दवा दी जाए तो ड्रग की थेरेपी ज्यादा इन्फ्लुएंसिव होती है. Developing in developing child, it is apparent ontogeny has the potential of modulating drug response through altering pharmacokinetics and pharmacodynamics. इसीलिए कहा जाता है कि ontogeny, that is ontogenic development, that बच्चों में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो ज्यादा इफेक्टिव इसलिए होती हैं कि बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी, they have got the potential of modulating drug response. Drug response को they can modulate the child. So this is the combined effect of the pharmacokinetics and pharmacodynamics general principles. ये जो दो principles थे पहले के drug therapy के, pharmacokinetics and pharmacodynamics, अगर इनको हम दो ग्राफ से स्टडी करें तो it is the drug effect is produced only when an exposure occurs that is sufficient to produce a drug receptor interaction capable of modulating the cellular milieu and inducing a physiologic response. आप concentration और effect का एक अगर curve तैयार करें, concentration that is जिस medium में drug दिया गया, that is being carried through the plasma, blood plasma, or the other body liquids जैसे hormones हैं, enzymes हैं, को अगर alter करके करें और इनका effect का percentage carry करें तो to some extent it is increasing effect, and after that it becomes stable, that is in a linear manner. That is the effect, plasma concentration versus effect curve, and this is plasma concentration versus time curve. इसको हम डिटेल्स में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. ये एक्स एंड वाई कर्व पे है, एक्स प्लेन पे है टाइम और वाई प्लेन पे है ग्राफ. अगर क्रिएट करते हैं तो कंसंट्रेशन mg per liter. दिस ग्राफ कर्व shows that the drug is in the beginning it is at 0 level, it starts increasing to some extent, it reaches the peak जहां पर मेडिसिन के मैक्सिमम इफेक्ट शो होता है और उसके बाद देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, मेडिसिन का इफेक्ट डिक्लाइन करना शुरू होता है. एंड दैट इज द टाइम व्हेन ड्रग आइदर इट शुड बी स्टॉप्ड और इट शुड बी ऑल्टर्ड और इट शुड बी combined. That is the condition. So let us see one by one these two conditions. This is the plasma concentration versus effect curve. This is, so girls और द स्टूडेंट्स रादर, जो लड़कियों को पढ़ाने की आदत है तो इसलिए गर्ल्स ही हमेशा निकलता है. इस चार्ट को समझने के लिए आप क्लिनिकल गेट एंड nature.com और lls.org ये तीन साइट्स में, देन ब्रिटानिका ऑल्सो,
ये this curve I have got from, I think, the site from which this curve, इसका बहुत लंबा चौड़ा डिटेल दिया गया है, and that is very effective also. You can always go through that. अगर आप interested हैं तो you can go through the lls.org.com to understand or to follow the details and the calculations in इस इक्वेशन के बेसिस पे आप इफेक्टिवनेस का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी ड्रग का मैक्सिमम इफेक्टिवनेस या द कैलकुलेटेड इफेक्टिवनेस इन टू कंडीशंस, दैट इज कंसंट्रेशन वर्सेस इफेक्ट कर्व और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व जो हम लोगों ने यहाँ देखा. इनका अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं, यू कैन गो थ्रू द साइट क्लिनिकल गेट. यस, आई वाज रिकॉलिंग दैट. clinicalgate.com में आपको डिटेल्स में ये दोनों कर्व्स का के डिटेल्स, सॉरी इट हैज जस्ट गॉन. So this is the clinicalgate.com में आपको बहुत डिटेल्स में ये कर्व एंड इसके बेसिस पे concentrations you can get. I'm here explaining the basics. So this is the relationship. This is the details of these two graphs: concentration versus effect curve and concentration versus time curve. These two curves, how they can be studied, E0 से शुरू करके E max पे पहुंचते हैं, या E0 एक population में this study has been done. E0 when the effect of the drug is 0, EC50 when the effect of the drug has been recorded as 50%, then it is control. EC is the effective concentration, E50, and this is the effect in percentage has been calculated at E max, the maximum concentration per this graph has been obtained. The details of this graph is given here. You can go through. इतना details अगर हम एक एक discuss अभी करेंगे तो it will take much time. So in very short, I have just given you what is this curve, concentration versus effect curve, and this is concentration versus time curve. Again here the medicine, the drug has started its concentration in the liquid through which it is being distributed. It is started here, then it reached the maximum, that is the concentration max. Concentration में maximum concentration यहाँ पे पहुँचता है, and then it starts declining. This is the Ke, that is the rate constant. This constant, rate constant, can be calculated through this equation. This AUC is the area under curve. Curve के under का area को calculate कर सकते हैं. This is the time in hour, and this is the concentration in percentage, in mg per liter in percentage. So again here is the giving. I have just given. If you are interested, you can go through the language is not very tough, but we don't have that much time that we can explain. I can explain line by line of this entire these two graphs. The basics I have given you. You can go through, or if you ask, go write in the comment box. I will explain the two graphs in a separate class, or we can see the therapeutic dynamism in another class. Therapeutic drug monitoring we can do in one more class with therapeutic index. I have already mentioned all these terms in this class, but we are not going in details of those terms here, because it will take a lot of time. Now, these are some of the important terms which are used in the drug therapy. That is absolute bioavailability, that is shown by F, in the fraction of a drug dose administered by extravascular route that is absorbed into systemic circulation. एक और जरूर एक पार्ट छूटा है जिसका कि स्लाइड डाला जा सकता था, the ways through which the drug is administered. ये orally दिया जा सकता है, ये injection से दिया जा सकता है. It is all I have already mentioned in one slide, but not in details. इंट्रावास्कुलर दिया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर दिया जा सकता है, ओरली दिया जा सकता है, थ्रू द इंट्रावेनस दिया जा सकता है, एंड मेनी ऑफ द मेडिसिन्स आर गिवन थ्रू
used to be given through the rectal opening. Rectal opening से भी बहुत सारी medicines दी जाती हैं. So these terms are used. They are used, or they are utilized rather, during the modes of, depending upon the modes of the administration of the medicines. Oral, intramuscular, yes, it is given here only. Intramuscular, subcutaneous, intraperitoneal, intraosseous, bone के through, intratracheal, trachea के through, intravaginal, intraurethral, sublingual, जीभ के नीचे से, buccal, rectal और dermal into the systematic circulation. The basic theme is, the basic goal is to reach the basic circulation medium. Area under the curve, AUC, conceptually a measure of both the extent of drug absorbed and its persistence in the body. Body में drug absorb कितना हुआ और कितनी देर body में persistent रहा. That is the area under curve, AUC. Then bioequivalence of a drug conduct is achieved if its extent and rate of absorption are not significantly different from those of a reference standard drug product when administered at the same molar dose. Dose की dependency कितनी होनी चाहिए? Then clearance of a drug, represented by the volume of blood from which a certain amount of unmetabolized drug is removed or cleared. ड्रग को क्लियर भी होना चाहिए, जहां मेटाबॉलिज्म में जरूरत नहीं है, एक्टिव नहीं हुआ है ड्रग, दैट शुड बी क्लियर्ड एंड दैट कैन बी मेजर्ड पर यूनिट by any or by all pathways capable of drug removal: renal, hepatic, biliary, pulmonary, breast milk, sweat. जहां जहां से ये, these are the main ways कहां से, जहां से ड्रग को क्लियर होना चाहिए, जो हार्मफुल इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए. In pharmacokinetics, clearance is generally represented as either total body or plasma clearance, renal clearance, non-renal clearance, etc. A clearance is easily determined from knowledge of drug doses and AUC. Then the third is a compartment, a hypothetical area or chamber, represents hypothetical space that is helpful in quantitating the relationship between drug doses and the amount of drug in the body at a given time. Then the disposition refers collectively to the processes of drug absorption, distribution, metabolism and elimination. ये चार जो फैक्ट हमने देखे हैं, ये ADME जिनको एक साथ कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. ये पहले भी हमने देखा था, एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन. इन चार चीजों के पर डिपेंड करता है डिस्पोजिशन, बॉडी में कितना डिपॉजिट हो रहा है ड्रग, उसको हटाना. All of which occur simultaneously following drug administration as opposed to being discrete pharmacological events. Then another important term is elimination half time of a drug, P1/2, represents time for post-absorption blood or plasma concentration to be reduced by 50%. 50% reduce किया जाने का तरीका होता है elimination half time drug. The apparent elimination rate constant Ke can be reliably estimated from two drug concentrations obtained on the elimination phase of the concentration versus time curve. So this, as I have told you, ये numerical question इस पे आ सकता है. You can go through the clinicalgate.com, जिसमें आपको details में इसकी numerology questions भी आपको मिलेंगे. Then first pass effect describes phenomenon whereby a drug may be metabolized and or chemically degraded following extravascular administration before it reaches the systemic circulation. It is generally a consideration for drugs given by oral or rectal routes. Oral rectal routes से first pass effect show होने के पहले removal नहीं हो जाए, उस पर ध्यान दिया जाता है. Then protein binding results. When a drug combines with plasma, very important point to be noted for the drug therapy. Extracellular tissue proteins to form a reversible drug protein complex. Protein binding drug protein complex K4, and it is non-specific depending on the drug's affinity for the protein molecule, that is the binding site, the number of protein binding site and the drug and protein concentration. That is the very important phenomenon, very important point for the drug therapy. Relative bioavailability reflects the extent of drug absorbed from one doses
form given by an extravascular route of administration in comparison with a doses of a standard drug formulation administered by the same route. Then another important term is steady state, reflects a level of drug accumulation in the blood and tissue upon multiple dosing when the rate of input, that is the amount of drug placed into the systematic circulation, and output, that is drug clearance, are at equilibrium. जो दिया जा रहा है, जो निकल रहा है, वो equilibrium में रहे. Then therapeutic range represents a range of plasma drug concentration where the drug has desirable therapeutic effect in the majority of subjects receiving a drug at an age appropriate normal dose. Dose age appropriate होना चाहिए. Then the therapeutic index, also known as therapeutic ratio, is a comparison between the amount of a drug that causes the desired therapeutic effect to the amount that causes death. Index decides कि कितना डोज ड्रग का पॉजिटिव इफेक्ट करेगा, और उस इंडेक्स से ऊपर पहुंचने पर वो फेटल भी हो सकता है. That is this therapeutic index decides that and says that. Then impact of ontogeny on drug disposition, that is involves the impact of development, that is ontogeny from infant to adulthood on the pharmacokinetics of a given drug determination. And then the drug absorption occurs via passive diffusion, but active transport or facilitated diffusion might also be necessary for drug entry into the cells. This is the common transportation through plasma membrane. Now, several physiological factors affect this process. It includes pre-oral absorption, extravascular absorption, etc. Then the drug distribution, drug metabolism. These are the terms. One by one details you can take from these slides. So these are the important terms used in drug therapy. Appropriate treatment, inappropriate treatment, additive effect, synergetic effect, antagonistic effects. These are the effects of the drugs in combination. Combination में कभी कभी नॉर्मल इफेक्ट रहता है तो एडिटिव होता है, कभी सिनर्जेटिक इफेक्ट, दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल टाइप ऑफ इफेक्ट. देन एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, कंबाइंड थेरेपी में ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक इफेक्ट. देन इज द थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इन ड्रग थेरेपी. कौन कौन सी बहुत कॉस्टली दवाइयाँ, कॉस्टली मेथड ऑफ ट्रीटमेंट कब यूज किया जाना चाहिए, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को काउंट करके उसको डिटर्मिनेशन करके ये डिसाइड किया जाता है कि ड्रग की मॉनिटरिंग, किस दवा की मॉनिटरिंग कैसे की जाए, दैट इज कॉल्ड एज द थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. पहले भी हम जिसको देख चुके हैं, थेरापेटिक इंडेक्स. Now, these are some important ways of drug therapy. बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंटल तरीकों में तो बहुत इंस्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, इमीडिएट किस किस तरह से मेडिसिन दी जाए. बट सम कॉमन वेज आर एंटी माइक्रोबियल थेरापी. इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादातर इसमें वैक्सीनेशन वगैरह से ये ट्रीटमेंट होता है. कीमो प्रिवेंशन, बीमारी को होने से रोकने के लिए केमिकल्स दिए जाएं. कीमोथेरापी, बीमारी हो जाने के बाद केमिकल्स दे करके बीमार ऑर्गन्स को, पार्ट्स को, टिश्यूज को सप्रेस किया जाए, इनएक्टिव बनाया जाए, दैट इज कीमोथेरापी. कॉम्बिनेशन ड्रग थेरापी, हर जगह ड्रग थेरापी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉम्बिनेशन ड्रग थेरापी. ड्रग डिलीवरी, मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरापी, मॉलिक्यूल्स को टारगेट करके थेरापी की जाए, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को या बॉडी के केमिकल मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट करके, दैट मे बी at the molecular therapy at the molecular level. Then pharmacogenetics, genetic level पर थेरापी की जाए. Now drug therapy types based on targeting area. ये ब्रिटानिका यहाँ पे मैंने लिखी दिया है, मुझे पहले भी लिखना चाहिए था. मुझे बाद में ये फील हुआ कि अगर हम साइट्स बताते जाएं
तो आप डिटेल्स जहां पर भी जाना चाहेंगे वहां जा सकते हैं। तो ब्रिटानिका में ये बहुत डिटेल्स में एवरी पॉइंट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन वेरी डिटेल्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कंसल्ट। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग थेरापी बेस्ड ऑन टारगेटिंग एरिया। किन एरियाज को टारगेट करना है ड्रग को, बेस्ड ऑन दैट द थेरापी में बी सिस्टमेटिक, systemic drug therapy, local drug therapy, surgical therapy, radiation and other non-surgical therapy, psychotherapy using drugs। अब psychotherapy बहुत तरह से होता है, पर यहाँ मेरा टॉपिक है ड्रग थेरापी। तो जब ड्रग्स देकर के साइकोलॉजिकल एनालिसिस की जाती है और ट्रीटमेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज psychological therapy. Now, these are the details of each and every type of therapy. Antimicrobial therapy kills, inhibits and growth of microorganisms. Chemoprevention, use of chemical compounds to prevent or delay the development of specific disease. Then chemotherapy, combination drug therapy. You can go into the details of these. We have already बार बार अपने पूरे लेक्चर में मैंने बार बार इन पॉइंट्स को डिस्कस किया है। Drug delivery describes method and approach of delivering drugs or pharmaceuticals and other xenobiotics to their site of action within an organism with the goal of achieving a therapeutic outcome. Issues of pharmacodynamics and pharmacokinetics are important considerations for drug delivery. Then molecular targeted therapy we have seen. Now, these are the psychological therapy में इस तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं to improve self-esteem, positive coping skill for handling stress, better coping mechanism for mental health issues, understanding behaviors and motivations. इन कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए साइकोलॉजिकल ड्रग थेरापी की जाती है। नाउ व्हाट आर द गोल्स ऑफ ड्रग थेरापी? इन वेरी शॉर्ट, ड्रग थेरापी की जितने डिटेल्स हमने देखे उनका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, हम 4 प्रायोरिटीज पर फोकस कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग यूज trajectories, accelerating development of treatment, addressing real world complexities, and in last, the Cephopedia, that is empowering with health and safety. This is the latest aspect of drug therapy. ड्रग देने के पहले बहुत सारे हमारे इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज की तो अभी स्थिति नहीं इतनी डेवलप हुई है या नहीं अवेयरनेस फैला है, बट बाहर हो रहा है। जो बाहर इट इज एक्टिवली बीइंग प्रैक्टिस्ड कि जो भी मेडिसिन दी जा रही हैं वो उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं वो पहले एक्सप्लेन किया जाए। डॉक्टर्स उस पर साथ साथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल दोनों इफेक्ट्स पर काम करके तब एक कंपैरेटिव बैलेंसिंग इक्विलिब्रियल थेरापी को यूज करें। दैट इज कॉल्ड एज द सेफोपीडिया एक्सप्लेन्स ड्रग थेरापी। सेफोपीडिया, सेफ्टी फर्स्ट एंड ड्रग थेरापी, ड्रग को देना जहां पे जरूरी है, सेफ्टी के साथ साथ ट्रीटमेंट के लिए ड्रग को यूज किया जाए। दैट इज मेडिकेशन prescribed via this type of therapy comes in various forms, taken orally as a pill or liquid or injected into tissues or muscles. Drug therapy plays important role in treating psychiatric illness, though oftentimes it is combined with talk therapy for more effective outcome. Treatment of diseases such as cancer, HIV infection, diabetes sometimes requires multiple drugs with different active ingredients to be administered. That is the combination therapy. And a common problem that occurs during the drug therapy is that the patient may build up a tolerance to drug taken, thus leading to higher required doses in order for drug to be effective. बहुत बार होता है कि इतना ज़्यादा इलाज इतना ज़्यादा लंबा चल जाता है या दवाइयाँ इतनी ज़्यादा दे दी जाती हैं कि उनके इफेक्ट दिखने बंद हो जाते हैं, या जैसे मैंने कहा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व में डिक्लिनेशन पे आ जाता है इफेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम we have gone through drug therapy and we have gone through the important points, and as I have told इसमें बहुत सारे ऐसे points हैं जिन पे अलग से discussions किया जा सकता है. So do write in comment box if you are interested. Otherwise, I think it will be, this class may be very much helpful to you.
Do like, share, and subscribe the channel if you want to grow it, if you like it, and press the bell icon to get notified about my upcoming videos. Thank you. Thank you so much, students. See you soon.